नहीं कर रहे हैं। आई एम वेरी सैड। आपको पता है मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में, किसी ने भी मुझे पिक्चर बना के ग्रुप में शेयर नहीं की। एंड जिन लोगों ने सूरह कौसर और सूरह इखलास मुझे सुनाई थी उनके लिए ओके, इसी तरह मुझे रिस्पॉन्स देते रहे। ओके, आज मैं आपको दूसरी सूरत सुनाऊंगी, पढ़ाऊंगी, वो आपने फिर इसी तरीके से याद करनी है और मुझे फिर नेक्स्ट डे पे याद करके वॉइस मैसेज से सुनानी भी है। ओके, वो मैं आपको वॉइस मैसेज सेंड करूँगी ग्रुप में। ओके, कम टुवर्ड्स योर स्टडी। टेल मी व्हाट्स द डेट टुडे? Date today is 3rd December 2020. Which date? 3rd December 2020. And which is the running month? You have known which is the running month? Yes, the running month is December. The running month is December, and it's the last month of the year. Okay, this is the last one. Got it? And which day today? The day is Thursday. Which day? Thursday. Yes, Thursday is the study day, not the fun day. Okay, study day. Thursday is the study day. Okay, okay. Come towards your general knowledge book. General knowledge. We have started what? We have started the next topic, food. हमने food start किया हुआ था. Okay. Hurry up, tell me the name of any 4 vegetable. 4 vegetable. जल्दी से बताइए मुझे। पोटैटो, ऑनियन, टर्निप एंड कैरेट और रेडिश। ओके, आपने मुझे वॉइस मैसेज में भी बताना है, मैं आपसे पूछूंगी। ओके, नाउ ओपन योर जनरल नॉलेज, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11। ओके, एंड द पेज नंबर 11 द क्वेश्चन इज टेल द नेम्स ऑफ एनी 4 फ्रूट्स। पहले आपने मुझे वेजिटेबल्स के नेम बताए थे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज टेल द नेम्स ऑफ एनी 4 फ्रूट्स। अब आपने 4 फ्रूट्स के नेम्स बताने हैं। टेल हरी अप। मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। ओके, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना, देयर आर 4 फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 फ्रूट्स दैट यू ईट इन समर। That you eat in summer, जो आप गर्मियों में खाते हैं वो कौन से 4 फ्रूट्स हैं, ठीक है, बताइए मुझे। मैंगो, आप समर में मैंगो खाते हैं, यस। वाटरमेलन, यस। पीच, यस एंड मेलन। खरबूजा, तरबूज। पीच किसको कहते हैं? आड़ू। एंड मैंगो, मैंगो आम। ओके, सो मैंगो, वाटरमेलन, पीच एंड मेलन। ओके, the next question is name any 4 fruits that you eat in winter. That you eat in winter. The running season is winter. Yes. अब आप बताइए विंटर में कौन कौन सी फ्रूट आप लोग खा रहे हैं घर में? एप्पल खा रहे हैं, यस। ऑरेंज, यस। पोमग्रेनेट खाते हैं, यस। एंड गुआवा भी खा रहे हैं, हाँ जी, गुआवा भी, यस। सो एप्पल, orange, pomegranate and guava. These are the fruits of winter. Winter के fruits हैं, okay? And summer के fruits mango, watermelon, peach and melon. Okay? So 3 questions on the page number 11 of your general knowledge book. You have to memorize the first 3 questions. Okay? First 3 questions आपने याद करने हैं और लर्न करने हैं। गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स। ओके, वी वर डूइंग काउंटिंग इन वर्ड्स। वी वर डूइंग व्हाट? वी वर डूइंग काउंटिंग इन वर्ड्स एंड वी हैव डन अप टू 16। सबने याद किया 16 की स्पेलिंग? 16 तक किस किसने याद किया? गुड, सबने, सब बच्चों को आनी चाहिए। ओके, okay, let's come towards the next number 17. Okay, first look at this. What is this? This is birthday cap. What? Birthday cap. Okay, and there are many stars. Okay, count the stars. Count the stars and writing words. Okay, let's count the stars. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. 17. Okay. So what is the spelling of 17? S E V E N. 7. Put T in T-double-E-N. T. Write down the 7 and T-double-E-N. You have to put. It will become 17. Okay. And the number is 1 and 7 make 17. 1 and 7 make 17. So repeat with me. S-E-V-E-N. 7. T-double-E-N. T. 17. Okay. And the number is 1 and 7. Got it? Come towards the next. Which is this? What is this? This is umbrella. Yes. And these are the raindrops. These are the raindrops. Count the raindrops and write in words. आपने raindrops को count करना है और फिर words में लिखना है. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. How many raindrops are there? 18. So how can we write? Write down first 8. E I G H T. 18. Double-E-N. Put T double-E-N. 18. Okay. E I G H T double-E-N. 18. And the number is 1 and 8 make 18. 1 and 8 make 18. 1 and 8 make 18. Okay. Let's come toward the next picture. And the next picture is, what is this? Ice cream. This is ice cream. Okay. And what is this? These are the bunties. Bunties sticked with the ice cream. Okay. Cream के ऊपर क्या लगी हुई है? Bunties लगी हुई है. Okay. Count the bunties and write in words. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. Okay, 19. There are 19 bunties. So count the bunties and write in words. What is the spelling of 19? N-I-N. Don't put E. Okay, N-I-N-E. It makes perfect 9. Don't put E, but N-I-N-T-double-E-N. 19. N-I-N-T-double-E-N. 19. And the number is 1 and 9. 1 and 9 make 19. 1 and 9 make 19. Got it? Okay. Let's come. What is this? This is a tree. This is a tree. And there are strawberries. Strawberries on the tree. Okay. Count the strawberries and write in words. Count the strawberries and write in words. Okay. Let's count the strawberries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. There are 20 strawberries on the tree. 20. So how we will write in words? 20. 20. T-W-E-N 20. 20. T-W-E-N-T-Y 20. T-W-E-N-T-Y 20. And the number is 2 and 0 make 20. 2 and 0 make 20. Okay. So we have done the counting in words till 20. 1 to 20. You have to memorize it.
आपने इसको याद करना है और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी ग्रुप में, और जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसके लिए क्लैपिंग होगी। गॉट इट? ओके।